So children, now we will start with our new lecture, that is called lecture number 7, connected to grammar. Okay children, now before starting this, as you know, we are at present going through figures of speech. 1 or 2 live lectures were there, but now our teachers are available, so we are supposed to go in a recorded pattern. But live or recorded doesn't make any difference, as I told you. Is it clear? So now, what is the precondition before starting our lecture? You are supposed to have your rough book, your pen, your reference book, right? Your reference book, this one, part 1 or part 2, whatsoever it is. At present I am having part 1 with me. Okay? You can have your part 1 or part 2. Then we'll go through different figures of speech. Now, what is written over here? Continued from previous lecture. Now, we have gone through 2 or 3 lectures, almost 2 lectures. This is our 3rd lecture regarding figures of speech. We have learned alliteration, right? Let me revise in a quick session. What is meant by alliteration? Alliteration means alphabets are repeated, right? I am writing in short, so you can cope up once again. Alliteration. Alliteration, alphabets. Alphabets, right? Alphabets are repeated twice or more. I am writing in shorter, twice or more. Then it was repetition. Words are repeated. Words are repeated, right? Words are repeated. Then it was simile. Direct comparison. Direct comparison. Remember, words like as and like. As and like are used. Direct comparison between 2 different objects. Using the words like and like is called simile. And we have gone through number of examples. Then we have gone through metaphor. Metaphor, indirect comparison. Indirect comparison, right? As and like are not used, right? As and like are not used. Metaphor is an indirect comparison between 2 different objects where words like as and like are not used. If as and like is used, it is called simile. And if as and like is not used, it is called metaphor, right? Then we have gone through personification. Personification. Personification stands for non-living object given living qualities. Living qualities. Right? You are supposed to find non-living object from the sentence. And you are supposed to locate living quality of an object, right? Non-living object है जो living की एक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं हम personification. ये मैंने आपको 5 सिखाई थी. Alliteration मतलब alphabets are repeated twice or more. Forget that definition, whatever it is given. We are going on an easy track, ताकि सब बच्चे को आपको perfectly समझ में आ सके. Repetition, words are repeated. Simile, direct comparison by using words like as and like. सारे examples भी मैंने, I think 3 or 4 examples in each and everything I have given you, right? Then it is metaphor, indirect comparison, personification, non-living object आपको ढूंढना है पहले, फिर बाद में उसकी living qualities ढूंढनी है, ताकि वो बन जाते हैं personification. तो ये मैंने आपको पहले 2 lecture में सिखाया था, right? Now we'll switch over to other figure of speech, right?
it is better you download this lecture. Okay? So constantly you can easily understand when you are studying at home, right? When you are having free time, you can repeatedly look at that lecture and you can understand. Okay? Now, what is meant by apostrophe? My new figure of speech is apostrophe. Apostrophe. Sixth one. T R O P H E. Apostrophe. Right? Apostrophe. What is meant by apostrophe? When you write this definition, when direct address, when direct address is made to an object, which is physically not present, is called apostrophe. Right? You write this simple definition. When direct address is made to an object which is physically not present, is called apostrophe. Okay? But sometimes we are considering some physical objects also. Now see, ये इसमें एक दिक्कत आएगी. मैं ऐसे बोलता हूं कि when a physical object is not present, still you are having a talk. जैसे अभी मेरा लेक्चर है तो ये अपॉस्ट्रोफी में लेक्चर आता है. कैसे कि अभी मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं तो मैं ऐसे सोचता हूं कि सारे बच्चे लोग मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन आप तो आपके घर बैठे हो, तो मेरे सामने अभी कोई नहीं है. फिर भी मैं ऐसा सोच के बताता हूं कि चलो सारे बच्चे लोग ऐसे लाइव पढ़ रहे हैं. तो अभी जो मैं टीचिंग कर रहा हूं, अभी मैं जो आपको सिखा रहा हूं, वो एपोस्ट्रोफी की भाषा में सीखते हैं. आया समझ में? At present you are not physically present in front of me, but still I imagine that you all people are physically in front of me and I am delivering my lecture, I am teaching you something. Same way, when direct address means direct conversation, address means conversation, जो हम direct speech बोलते हैं, when direct conversation is made to an object which is not physically present, उसको बोलते हैं apostrophe. अभी एक स्टेप आगे, जो फिजिकली ऑब्जेक्ट हमारे सामने होते हैं, राइट? मान लो कि आप मेरे सामने होते हो तो मैं आपको यू अथवा योर बोलूंगी, आप भी मेरे को यू और योर बोलेंगे, बराबर? ऑब्जेक्ट प्रेजेंट, ऑब्जेक्ट which are present, which are objects which are present physically in front of us, in front of us, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यू अथवा योर. ये दोनों वर्ड्स बताते हैं कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल हमारे सामने है, मतलब हम उसको 1:1 की भाषा में बात कर रहे होते हैं, बराबर है? तो इसको बोलते हैं यू और योर, बराबर है? ऑब्जेक्ट्स विच आर प्रेजेंट फिजिकली इन फ्रंट ऑफ अस, इट इज डायरेक्टली कन्वर्स्ड बाय विच वर्ड? यू एंड योर. अच्छा, मेरी डेफिनेशन क्या है? When direct address is made to an object which is physically not present, मेरे को not present की भाषा चाहिए. आया समझ में? मेरे को not present चाहिए. तो मैं क्या करूंगा? तो देखना, अभी मैं रब करता हूं, अभी दूसरा एग्जांपल लिखा, दूसरी भाषा लिखता हूं, राइट? ओके, लेट अस सी.
objects which are physically not present. Then which words are used usually? T H double E, D. बराबर? T H double E, D. मैं ब्लू में लिखता हूं ताकि आपको पता चल सके. T H double E, D. T H O U, thou. T H Y. T H Y, thy. These are the three words which shows apostrophe. Thee means you. ती को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट में उसको यू बोलते हैं और एब्सेंट ऑब्जेक्ट में दी बोलते हैं. ताऊ का मतलब होता है योर. दाई का मतलब होता है योर. यू अथवा योर जो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उसको यू अथवा योर बोलते हैं. जो एब्सेंट ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसको दी, दाव या धाई बोलते हैं. अगर ये वर्ड्स नहीं आते हैं तो भी अपॉस्ट्रोफी, ये एक तरीका है अपॉस्ट्रोफी ढूंढने का. सीधी सी बात मैं बताता हूं आपको. अगर लाइन में आपको ये वर्ड दिखे दी, दाव या दाई तो 100% वो अपॉस्ट्रोफी बनती है, क्योंकि ये वर्ड्स तब भी यूज होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है. है समझ में? When we are using this word, these words are used only when an object is physically not in front of us. If it is physically in front of us, we are using you, your, जैसे. अच्छा, if the object is not physically in front of us, we are using thee, thou, thy. तो ये एक तरीका हुआ. When you locate thee, thou, thy, it is apostrophe. बराबर? अभी दूसरा तरीका बताता हूं. एब्सेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिसको हम देख नहीं सकते हैं. बराबर है? एब्सेंट ऑब्जेक्ट जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम शायद फील ही कर सकते हैं. तो वो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? अगर लाइन में ऐसे वर्ड दिए हैं, विंड, एयर, गॉड, बराबर, डिफरेंट सीजन्स, राइट. सपोज आई से विंटर, यू आर सो हार्श. अच्छा, अभी विंटर सीजन चल रही है, हम देख सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं. कोल्ड को हम फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते. वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है. अगर ऐसा कोई वर्ड आता है, मान लो विंड नामक वर्ड आया, एयर मतलब विंड ही होता है, कोई बार एयर यूज करता है, कोई बार विंड, गॉड जिसको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते. तो ये सारे वर्ड्स हमको अपॉस्ट्रोफी बताते हैं. अगर इन लोगों के साथ, ये ऑब्जेक्ट के साथ हम डायरेक्ट बात करते हैं, ये ऑब्जेक्ट आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी हम उससे बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी. क्या बोलते हैं उसको? अपॉस्ट्रोफी. एम आई क्लियर? ओके. नाउ राइट ऑल दिस थिंग्स. When direct address is made to an object which is physically not present is called apostrophe. Present object को क्या बोलते हैं? You अथवा your. Absent object को क्या बोलते हैं? Thee, thou, thy. अगर ये वर्ड्स नहीं है तो कौन से वर्ड्स लाइन में होने चाहिए? Wind, air, God, different seasons. ये सारे ऑब्जेक्ट हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उसको महसूस कर सके, और जिसको महसूस कर सके और डायरेक्ट उससे बात करते हैं. जैसे मैंने अभी बोला, आप मेरे सामने नहीं हो, छता मैं आपके पास आपके सामने बात कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी. ओके,
बिल्कुल पक्का समझ में आ गया? Am I clear with you? Okay. Now we'll go with examples. Right? Direct address is made to an object which is not physically present. Okay? Now you are just supposed to write simple explanations. Take out that poem Wind. Right? Poem number 2 Wind. उसमें ढेर सारी apostrophe दी है. Example number 1. पहली लाइन है Wind. Wind. Come softly. Come softly. बराबर? Wind. Come softly. अच्छा, wind को हम देख सकते हैं, तो हम कैसे उसको बुला सकते हैं? How can we call? जिसको हम देख सकते हैं उसको बुला सकते हैं. मान लो कि आप लोग मेरे पास बैठे हैं, तो मैं किसी लड़का या लड़की को बोलता हूं, बेटा इधर आ, बेटी तू इधर आ, क्योंकि आप मेरे पास बैठे हो, मैं आपको देख सकता हूं, आप मेरे को देख सकते हो, तो इसलिए मैं आपको बोल सकता हूं. अगर विंड तो दिखाई नहीं देती है, फिर भी हम उसको बुलाते हैं. तो मैंने अभी क्या लिखा था? एयर, विंड, गॉड, सीजन्स, these are all the objects which cannot be seen, but still in poem these all things are directly called, they are directly addressed, and if these objects are directly addressed they are called apostrophe. और दूसरी बात क्या है? धी, धाव, धाई, ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, बराबर, जिसको यू योर बोलते हैं, तो मतलब ये अपॉस्ट्रोफी हो जाता है. अच्छा, ये लाइन हमारी है विंड कम सॉफ्टली. विंड को हम देख नहीं सकते, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या हुआ? यर, व्हाट इज माय आंसर? अपॉस्ट्रोफी. Apostrophe, right? What is my answer? First I'll write apostrophe. You are supposed to write same definitions, right? Here, direct address is made to the wind, which is physically not present. आप ऐसे लिखने का, अंदर का अंदर क्या लिखा है मेरे को मालूम नहीं, आप सीधी सरल भाषा में लिखो. राइट? Here direct address is made to the wind which is physically not present. Wind, come softly. जैसे हमारे कहने से वो विंड आ जाएगी, तो ये बन गई हमारी अपॉस्ट्रोफी. क्लियर हो गया? दूसरा, don't scatter the papers. Don't scatter the papers. Don't scatter the papers. किसको बोलते हैं? विंड को. किसको बोलते हैं? विंड को. कि भैया मेरे पेजेस स्कैटर मत करना, मेरे पेजेस उड़ जाएंगे, मैं काम कर रहा हूं अपना. सही बात है. जैसे विंड को डिस्ट्रक्शन करने आता है. कोई बच्चा, मान लो कि आपका छोटा भाई या छोटी बहन, जब आप पढ़ाई करते हो, राइट, तब आता है तो उसको आप इंस्ट्रक्ट करते हैं ना, बेटा ये चीज नहीं है छूने की, ये ऐसे ही रहने देना, मेरा काम बिगड़ जाएगा. ठीक इसी तरह poet directly addresses the wind. What is saying to the wind? Don't scatter the paper. जैसे विंड सुनने वाली उसकी बात, तो इसका आंसर बन गया अपॉस्ट्रोफी. अपॉस्ट्रोफी, उसका आंसर बन गया अपॉस्ट्रोफी. अच्छा, उसका एक्सप्लेनेशन क्या हुआ? Your direct address is made to the wind by the poet. By the poet. आपको इतना ही लिखना है, मैं आपको एक्सप्लेन के वास्ते लिखाता हूं. By the poet
not to scatter the papers. Not to scatter the papers. आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो not to scatter the papers. पक्का समझ में आ गया ना बच्चे लोग? पक्का? वेरी गुड. गुड. Don't scatter the papers. Direct address is made to wind by poet. विंड की जो पोएम है ना वो मैक्सिमम अपॉस्ट्रोफी की भाषा में है ताकि आपको मैक्सिमम एग्जांपल्स मिल सकते हैं. Shall I read it out? I want to go for third example. Now we'll go to third example. Don't throw down. Third example. Don't throw down the books from the shelf. Don't throw down the books from the shelf. किसको बोलते हैं पोएट? विंड को. बराबर. किसको बोलते हैं? विंड को. किसको बोलते हैं? विंड को. ये बन गई अपॉस्ट्रोफी. ये बन गई हमारी अपॉस्ट्रोफी. राइट? तो उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा वापिस. यार पोएट directly addresses ADDRESES. सॉरी हाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई. ADDRESES addresses the wind. आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो. Directly addresses the wind which is physically not present. Right? Which is physically not present. Which is physically not present. उसको बोलते हैं apostrophe. लिख लिया? पक्का? Good. Now, fourth example. You tore the pages of the book. You tore the pages of the book. Right? तो आपको ऐसा पहला सवाल आएगा. अभी तो सर आपने बोला ना कोई एब्सेंट ऑब्जेक्ट है तो आप दी दा उदा यूज करते हो, इधर प्रेजेंट में यूज. तो ये पोयम देखो, इमेजिन करते हैं पोएट विंड के बारे में कि सामने विंड खड़ी है, उसके सामने खड़ी है और डायरेक्टली उससे बात करते हैं अकेले. जैसे मैं भी सोचता हूँ, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो और आप मेरे सामने बैठ के मैं पढ़ाता हूँ, इसी तरह मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर करता हूँ. ठीक उसी तरह पोएट भी ऐसे सोचते हैं कि भाई विंड उसके सामने खड़ी है, उसको डांटते हैं. तो इसलिए उसने कौन सा वर्ड यूज किया है? यू. कौन सा वर्ड यूज किया है? यू. ज्यादातर दी था उताय आता है, लेकिन इधर यू आया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है. बी केयरफुल. ओके. सो यू टोर द पेजेस ऑफ माई बुक, सो इट विल बिकम अपॉस्ट्रोफी. Apostrophe. Right? What will be my explanation? Here, poetry directly add, here, ये ऊपर वाला लिख लो. Here, poet directly addresses the
ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट नहीं, एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट विंड, as if, as if, as if it is standing in front of him. इसलिए मैंने जो यू लिखा है ना उसका भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों यू लिखा है, as if it is standing in front of him. तो ये बन गया अपॉस्ट्रोफी. बिल्कुल क्लियर हो गया अपॉस्ट्रोफी? है पक्का हो गया अपॉस्ट्रोफी? शैल आई रब इट आउट? लिख लिया? चलो 1 मिनट लेते हैं, लिख लो आप. यू टोर द पेजेस ऑफ माई बुक. पोएम विंड है ना, उसमें से मैक्सिमम अपॉस्ट्रोफी है और एक एक लाइन की 2-2 3-3 होती है. वो आपको जैसे जैसे मैं आपको सिखाता जाऊं अब आप बनाते जाना. सही बात है? ओके ओके. सो दिस इज माय आंसर. क्लियर? शैल आई रब इट आउट? नाउ विल स्विच ओवर टू नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच. Okay, now it is anastrophe. Next it was 6th one, now 7th one, anastrophe. A-N-A-S-T-R-O-P-H-Y, anastrophe. रिवर्सल, उसको रिवर्सल, उसको रिवर्सल भी बोलते हैं, बराबर है? ऐसा भी वर्ड शायद यूज होगा. Reversal. Anastrophe means reversal. When the statement or the sentence, when the statement means sentence, given sentence is not arranged in a proper grammatical order, it is called anastrophe. आप पूरा लिखना. यो क्यों ऐसे क्यों एडजस्ट करते हैं? क्योंकि म्यूजिकल इफेक्ट के लिए. When the statement means given sentence is not given proper grammatical order, it is called anastrophe. पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देने वाला हूं, फिर हम टेक्स्ट बुक के एग्जांपल करेंगे. सेंटेंस दिया है, आपको ऐसा लगेगा कि सेंटेंस प्रॉपर अरेंज नहीं हुआ है. सही बात है, आप उसको रीड कर सकते हो लेकिन रिदम में आप बोल नहीं सकते हो. आपको ऐसा लगता है नहीं ये बात, मान लो पहला हिस्सा है वो बाद में आने वाला है, मिडिल वाला हिस्सा है वो पीछे आता है, पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाता है, ताकि आपको एडजस्ट करना पड़ता है, फिर वो सेंटेंस बनता है. तो उसको बोलते हैं एनास्ट्रोफी. व्हेन द स्टेटमेंट इज नॉट अरेंज इन अ प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर. क्यों ये लेसन में नहीं होता है? लेसन में स्टोरी होती है इसलिए वो प्रॉपर ग्रामेटिकल सीक्वेंस में लिखते हैं. लेकिन पोएम में उसका लिखने का इरादा क्या होता है? टू प्रोड्यूस अ म्यूजिकल इफेक्ट, रिदम प्रोड्यूस करने के लिए वो उल्टा पुल्टा सेंटेंस लिखते हैं. आगे वाला हिस्सा पीछे चला जाता है, पीछे वाला हिस्सा मिडिल में चला जाए, मिडिल वाला हिस्सा आगे चला जाता है, ऐसे. तो आप जब सेंटेंस पढ़ोगे तब आपको मालूम पड़ेगा ये सेंटेंस ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. तो अगर ये सेंटेंस गलत है तो ये सेंटेंस बन गया एनास्ट्रोफी. ओके, वन सिंपल एग्जांपल. Suppose I may write eat grass cow. Eat grass cow. मान लो ऐसा मैंने एग्जांपल लिखा है.
तो मैं पढ़ सकता हूं, रीड कर सकता हूं, बाकी दिस सेंटेंस इज नॉट इन अ प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर. ईट ग्रास काउ ने कभी कभी नहीं आता. उसका आंसर क्या मिलेगा? काउ, काउ ईट्स, ईट्स ग्रास. Right? This is my right answer. If it is a textual thing, then this sentence would have been written like this: Cow eats grass. अगर ये पोयम में आता है तो शायद ऐसा सेंटेंस मिल जाए, ईट्स ग्रास काउ. तो ईट्स ग्रास काउ क्या हो गया? एनास्ट्रोफी. व्हाई? बिकॉज द सेंटेंस इज नॉट अरेंज इन अ प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर. तो इसको बोलते हैं एनास्ट्रोफी. ऐसे कई सारे सेंटेंसेस होते हैं, आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई आपको ये सही ऑर्डर में नहीं दिखते, इसीलिए आपको बोलते हैं एनास्ट्रोफी. ओके, चलो अभी उसका एग्जाम्पल लिखना है. बहुत कम है, बहुत कम है. एग्जाम्पल लिखो. wakes up, wakes up from the sleep, from the sleep. My slumber soul, slumber soul. ये 10th की लाइन है, इधर नहीं दी है. मेरे को जो एग्जांपल याद है मैं आपको लिखाता हूं. wakes up from the sleep my slumber soul. मतलब जो बंदा गुजर गया है, मर गया है, उसको हम जिंदा होने की, जिंदा खड़ा रहने की बात करते हैं. wake up from the sleep my slumber soul. वेक्स नहीं होता है, वेक आता है. हा? मैंने एस लिख लिया है. वेक अप फ्रॉम द स्लीप माय स्लम्बर सोल. तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है. उसको ऐसा लिखना चाहिए, माय स्लम्बर सोल प्लीज वेक अप फ्रॉम द स्लीप. ऐसा आना चाहिए. राइट? सो व्हाट इज माय आंसर? एनास्ट्रोफी. 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 राइट? एक फिक्स आंसर आपको लिखना है, फिर सही सेंटेंस आपको नहीं लिखना है. द गिवन स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट is not arranged in a proper grammatical order. आप पूरा लिखना, ये आपका फिक्स आंसर होगा. सब एनास्ट्रोफी में सब एक ही आंसर मिलेंगे. द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट अरेंज इन अ प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर. मतलब उसका सही आंसर क्या है वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है. मतलब ये सेंटेंस गलत है, बात खत्म. राइट? वेक अप फ्रॉम द स्लीप माय स्लम्बर सोल. एनास्ट्रोफी, द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट अरेंज इन अ प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर. लिख लो. फिर हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं ताकि मैं ढूंढ सकूं. You brought rain again. You are clever and poking fun. Fail crumbling houses, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies. The wind winnows and the crushes them. Yes. Suppose it will be in first poem. मैं ढूंढता हूं, आप लिख लो. Page number 19. Right? Yes. Though as far as passing by, I shall be carrying with his eye. Yes, there is one line.
shall I repeat out all? Okay. पेज नंबर 19 पे एक लाइन है, वो एपिग्राम भी बनती है लेकिन एनास्ट्रोफी की लाइन भी हमारी बनती है. आप जैसे सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर हो जाएगी तब अपने आप वो आप फिगर ऑफ स्पीच बनाने लगोगे. राइट? आई टुक द लेस ट्रैवल्ड. सेकेंड एग्जांपल, आई टुक the less traveled. Less traveled. Traveled by and that has made all the difference. Made all the difference. ऐसा सेंटेंस है. I took the less traveled by and that has made all the difference. अच्छा, पहला डिफरेंस ये है, लेस ट्रैवल्ड. और ये पहला जो हिस्सा है वो बाद में आएगा, दूसरा हिस्सा जो है वो पहले आएगा. राइट? ओरिजिनल सेंटेंस ऐसे आ सकता है, एंड दैट हैज मेड द difference as I took the less traveled. ये सही सेंटेंस है, बराबर है. एंड दैट हैज मेड द डिफरेंस एज आई टुक द लेस ट्रैवल्ड. पहले डिफरेंस कैसे आ गया? क्योंकि मैंने लेस ट्रैवल्ड रोड चुना था. लेस ट्रैवल्ड रोड होने के बाद डिफरेंस आया, मतलब एक्शन खत्म हो गई है. तो ग्रामेटिकली सेंटेंस क्या हुए? अभी मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं तो मेरे को पास्ट को तो रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा ना, इसलिए ये सेंटेंस सही है. लेकिन क्या दिया है? आई टुक द लेस ट्रैवल्ड. इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इतना हिस्सा दिया है आई टुक द लेस ट्रैवल्ड तो उसका मतलब क्या आएगा? आई टुक द ट्रैवल्ड लेस रोड. लेकिन ये क्या है? एंड हैज मेड अ डिफरेंस एज आई टुक द ट्रैवल्ड. तो इसका आंसर बन गया एनास्ट्रोफी. Here, the given sentence is not arranged in a proper grammatical order. In a proper grammatical order. राइट? लिख लो. ये तो मैंने आपको समझाने के लिखा है, ये लिखने की जरूरत नहीं. आप ये सेंटेंस के नीचे डायरेक्ट आंसर लिखो. ये तो मैंने जो रियल सेंटेंस होना चाहिए वो लिखा है. राइट? एंड दैट हैड मेड द डिफरेंस एज आई टुक द लेस ट्रैवल्ड रोड. ये सीक्वेंस बनता है. ओके? लिख लिया? राइट? देन वी विल स्विच ओवर टू अनदर एग्जांपल. नेक्स्ट. ओके, वही पोएम है पेज नंबर 19 पे. हम हाफ सेंटेंस लेंगे. आ सकता है ऐसे, हाँ, ऐसा नहीं कि फुल सेंटेंस ही आता है. हम हाफ सेंटेंस लेंगे. and be one traveler. Third one. And be one traveler. And be कहाँ गया? And be one traveler.
be one traveler, long I stood. Long I stood. मान लो कि इतना ही सेंटेंस मैंने दिया है आपको. एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, वो मेरे को नहीं चाहिए, वो दूसरा सेंटेंस है. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, तो उसका सही आंसर क्या आएगा? आई स्टूड लॉन्ग, आई स्टूड लॉन्ग बीइंग वन ट्रेवलर. ये उसका सही आंसर है. आई स्टूड लॉन्ग बीइंग वन ट्रेवलर. लेकिन क्या आंसर दिया है क्वेश्चन? एंड बी वन ट्रेवल्ड लॉन्ग आई स्टूड. तो ये बन गया हमारा एनास्ट्रॉफी. The sentence, the given sentence, the given statement, the given statement is not arranged in a proper grammatical order. Right? तो ये बन गया हमारा एनास्ट्रॉफी. The given sentence is not arranged in a proper grammatical order. क्लियर हो गया? लिख लो पहले. Right? Then we'll switch over to another one. Right? Then we'll switch over to another one. Okay? लिख लो. स्क्रीन पक्का? Okay? Right. Shall I shift over to another one? Apostrophe sikha, anastrophe sikha. Right? Then new one, internal rhyme. Internal rhyme. Right? That is easy one, huh, children? Internal rhyme. Sixth, seventh, it was eighth, sorry. Internal rhyme. Internal rhyme. Right? Internal rhyme मतलब two rhyming words in the same sentence to produce a musical effect. Right? When two rhyming words are given in a same sentence to produce a musical effect it is called internal rhyme. It is called internal rhyme. पहले मैं आपको इजी एग्जांपल देता हूं. राइट? Humpty Dumpty sat on the wall. Right? And they made a great fall. तो राइमिंग वाला वर्ड कौन सा आ गया? वॉल, फॉल. म्यूजिकल इफेक्ट के लिए. ये सिंपल एग्जांपल, लेकिन आपको थोड़े अलग से आएंगे, लेकिन ऐसे इंटरनल राइम बनता है. राइमिंग वर्ड्स, इंटरनल राइमिंग, दैट इज कॉल्ड इंटरनल राइम. तो हमारा आंसर क्या आएगा? ईयर. राइट? आई एम राइटिंग इन शॉर्टर IR. You write in full sequence. IR, because I have less space to go. Right? IR. Year
two rhyming words, two rhyming words. फिर आपको ये rhyming words ढूंढने हैं, right? Rhyming words, wall and fall are in the same sentence to produce a musical effect. Musical effect. ऐसे आपको लिखना है, right? To produce a musical effect, right? अगर स्क्रीन के नीचे चला जाता है तो मैं बोलता हूं, Humpty Dumpty sat on the wall and they made a great fall. And they, sorry बच्चों, and they made a great fall. तो ये क्या हो गया? Internal rhyme. Here two rhyming words, wall and fall, are in the same sentence to produce a musical effect. ये बन गया internal rhyme, right? अभी ये ढूंढते हैं. हमारे पोएम नंबर कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? रोड्स नॉट टेकन में ही है, देखना, हाँ, उसमें से हम ढूंढेंगे. Okay, let us see. Oh, oh, second example, first example. Oh, oh, I kept the first. Oh, I kept the first. Oh, I kept the first for another day. For another day. Right? Day. Yet knowing how the way, yet knowing how the way leads on the way. How the way leads on the way. Leads on the way. On the way. वैसे तो एक वे भी दिया है, लेकिन ये उसका रिदम आता है, बराबर. Oh, I kept the first one for another day, yet knowing how the way leads on the way. तो ये के कौन से मेरे पास राइमिंग वर्ड आए? वे और डे. तो ये क्या बन गया? इंटरनल राइम. इंटरनल राइम, right, is equal to here two rhyming words. कौन से हैं? Words. Day and way are in the same sentence to produce a musical effect. आप पूरा लिखना, क्योंकि मेरे को बचा के दूसरी एग्जांपल लिखना है. Are to produce a musical effect. ये बन गया हमारा इंटरनल राइम. ओके, एम आई क्लियर चिल्ड्रन? ये बन गया इंटरनल राइम, राइट? Then let us go for one more example.
दो लाइन हम इकट्ठी भी कर सकते हैं बच्चों. दूसरी पोएम ढूंढते हैं. रेन ऑन द रूफ. यस, ढूंढना पड़ता है. रेन ऑन द रूफ. दूसरी पोएम और आगे जाते हैं. टाइल्स ऑफ द लेंस फ्री. यस, here I mean dropping morning. बराबर. Next example. Dropping from the whales. Dropping. D-R-O-P-P-I-N-G. Dropping from the whales. Dropping from the whales of the morning. Of the morning. Of the morning. Where? To where? To where? To where? The cricket sings. The cricket sings. Right? You're dropping morning. ऐसे लिया है. ing, ing. Right? ing, ing. Okay? तो आप लिखो आंसर. Internal rhyme. आप लिखो. Here two rhyme are dropping morning are in the same sentence usually. ing की बात drop और mourn अलग है, लेकिन दोनों में ing आता है. Right? Here dropping and morning are in the same sentence to produce a musical effect. लिख लो आप पहले. Right? So we have gone through three figures of speech: apostrophe, anastrophe, and internal rhyme. Right? In homework, we are supposed to send from full syllabus, because we have gone through whole poem. First term, you can use first term poem as a practice one. हाँ? आप लोग use कर सकते हो. Homework. 15 sentence each. 15 sentence each. Write and learn. Write and learn. Number 1. Apostrophe. Anastrophe. Third, internal rhyme. Full syllabus. Full syllabus. आप पूरी बुक में से ढूंढ सकते हो. Right? You are supposed to find 15 sentences of each with explanation. Huh? With explanation. With explanation. With explanation. जैसे मैंने आपको लिखाया है. Right? 15 sentences each of apostrophe, anastrophe, internal rhyme. So, you can write this sentence and send to your associate teacher. Am I clear? With this, I'm ending this lecture. Till then, see you in next lecture. Till then, goodbye. Take care.